Good morning, students. Today we'll be looking at the same questions or the same exercise, not the same questions, from exercise 16.2, and we'll be looking on question number 20 onwards. So, if we have a look in question number 21, question number 21 goes something like this: a wire, when bent in a form of a equilateral triangle. So there's a wire, a straight wire. Okay, it's a straight wire, and you might have seen a wire which can be bent, easily bent, है ना? You might have played with it once in a while. So this wire can be bent, and it is forming a equilateral triangle in which all the sides are equal. All the sides are equal. Okay, and then they said the triangle that is made with this wire से ये triangle बना है, and the area for that is 36√3 centimeter square. So area of equilateral triangle is equals to, do you guys remember the formula of area of equilateral triangle? Anyone? So it's root 3 a upon 4. This is the formula, root 3 a upon 4. Okay, if you guys remember this. Okay, but I already know, and you already know the area of a equilateral triangle. What's the area? This is the area that is given. So when I put in place of area 36√3 centimeter square is equals to root 3 upon 4 a square, then I'll leave a over here so that I can find one side. If I get one side, I'll get all the sides. So 36√3 नीचे √3 आ जाएगा ये वाला, और ऊपर 4 आ जाएगा, और उधर क्या बचा? a square, right? And then root 3 and root 3 can be cancelled out, and then 36 इंटू 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि a के पास स्क्वायर था, इधर की स्क्वायर रूट हो गया. 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, बाहर आ गया 6, इंटू 4 किसका होता है? 2 का. तो a मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर. a मेरे पास क्या आ गया? 12. सो दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज 12. If I have all the sides of a equilateral triangle, and then I can find perimeter, means length of the boundary. Perimeter is equals to 12 plus 12 plus 12. That's going to give me 36 सेंटीमीटर. और यहाँ से मैंने फिर से तार तोड़ के एक वायर को स्ट्रेट कर दिया. इस वायर को क्या कर दिया? स्ट्रेट फिर से कर दिया. तो अब एक बात बताओ, अगर इसका पूरा लेंथ 36 सेंटीमीटर है, अभी इसका कितना होगा जब मैंने स्ट्रेट कर दिया? 36. अब मैंने इसको किस में बेंड कर दिया? स्क्वायर में. अब मैंने इसका क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया. अब भी इसकी टोटल पेरीमीटर कितना होगा? ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ से शुरू होता है. जब स्क्वायर बना दिया आपने, तो स्क्वायर का एरिया कैसे ढूंढते हैं हम लोग? ए स्क्वायर, राइट? और एरिया पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर 4a, और पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, ये पूरा लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, तो 36 है. 4 नीचे आ जाएगा और a आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 9 ज़र. सो ए कितना है? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर. दे सेट फाइंड द एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड फिगर व्हेन वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. मुझे एरिया ढूंढना, तो एरिया कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर, दैट इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सेकेंड पार्ट आई विल बी सॉल्विंग ओवर हियर. इफ यू हैव अ लुक, सेकेंड पार्ट क्या कहता है? जब वो वायर को हमने रेक्टेंगल फॉर्म में बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, ओके, और जब रेक्टेंगल में हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, लेंथ इज हाउ मच? 2 सेंटीमीटर, लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ. सो अगर विड्थ x है, तो ये जो लेंथ है वो x प्लस 2 है. फिर से पढ़ रहा हूँ, अ रेक्टेंगल, उसे बेंड किया, हुज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ. अगर ये विड्थ x है तो लेंथ कितनी है? 2 ज़्यादा है. ओके, सो आई ऑलरेडी नो द पेरीमीटर ऑफ दिस एज वेल. इसका पेरीमीटर कैसे ढूंढते हैं? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी. पेरीमीटर होता क्या है? लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द वायर. तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर मुझे ऑलरेडी पता है, पेरीमीटर क्या है? 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू l प्लस बी. l कितना है आपके पास? x प्लस 2, और b कितना है आपके पास? x.
देन 2 इज़ गोइंग टू कम डाउन एंड डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 18, सो ये 2x प्लस 2, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा और कितना बन जाएगा आपके पास 16 और 2x, तो आपके पास क्या बचा ये आपके पास 8 आ जाएगा x। तो आपका ये 8 आया तो ये कितना होगा 10। ओके, सो इफ विड्थ इज इक्वल्स टू 8, लेंथ is equals to 10 centimeter, and if you need to find the area कैसे ढूंढेंगे हम, 8 into 10, that is going to be 80 centimeter square। ठीक है, that's how you find the area। I hope you guys are getting it। Okay, let's see another question। Let's have a look at question number 27। Question number 27 says, what is the area of a rhombus whose diagonals are 12 centimeter and 16 centimeter? You know, it's a very simple formula. If you guys go back in the formula for area of a rhombus, it says half into product of diagonals। Okay, A equals to half into product of diagonals means what are the diagonals? The diagonals are 12 centimeter and 16 centimeter। Okay, so when I can cancel them out, maybe this one, 12 into 8, I'll get my answer। Okay, so 96 centimeter square, the area of a rhombus is 96 centimeter square। That's how you figure that out। Okay, it's a very simple one। Okay, let's have a look in this question, question number 31। Question number 31 says, if the diagonal of a rhombus are 8 centimeter, 6 centimeter, find its perimeter। So I'm going to draw a rhombus। This is the rhombus। Okay, A B C D। Okay, and diagonals are, this is 8 centimeter and this is 6 centimeter, and they do bisect each other। This is 4 centimeter, this is 4 centimeter, this is 3, this is 3, because they bisect each other and right angle form होता है बीच में, है ना, हम सबको पता है ये। So if you just have a look at this triangle AOB, in triangle AOB, can you guys have a look in triangle AOB? AOB, it's a right angle triangle, so I can say AB का square is equals to AO का square plus OB का square। Now AB I have no idea what is AB, and AO का square, पेरीमीटर तो ऐसे होगा ना जब साइड पता लग जाएगी। सो AO इज 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, so that's going to be 16 plus 9 AB square, and AB square is going to be 16 plus 9, what's your answer going to be? Think about it, think about it, think about it, 25, right? AB square, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 25, तो AB is equals to 5 centimeter। now this is 5, this is 5, okay, this is 5, this is 5, all the sides are 5। if I have to find perimeter, perimeter is equals to 4 into side, isn't it? So perimeter is equals to 4 into 5 centimeter, perimeter is equals to 20 centimeter square, sorry, not square, 20 centimeter। that's how you find the perimeter। Okay, I hope you guys are getting this। Okay, okay, let's have a look। the area of a trapezium is 540 centimeter square। okay, trapezium है, trapezium आपको पता है opposite sides are parallel, so I'm writing A B C and D। so the area is given to me, what area is equals to 540 centimeter square। if the ratio of the parallel sides is 7:8, 7:5 centimeter ratio, and the distance between them is 18, distance between the parallel sides is 18 centimeter। okay, find the length of the parallel side, मुझे इसकी और इसकी लेंथ ढूंढनी है। so I'll say let the length of parallel sides be 7x and 5x, simple as that। okay, so I can take 7x and 5x as the length of the sides। now you guys can have a look कि formula of area of a trapezium क्या होता है, half into height GHT into sum of
parallel sides. यही होता है formula. You guys can also hit your books and see, go back in the video and see what is the formula. So area is already given to me. You guys can have a look over here. Area is given 540 centimeter square is equals to half into height. जो distance होता है ना इनके बीच का, उसको बोलते हैं हम, जैसे ये देर का डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हाइट होता है. पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हाइट ही होता है. इज 18 सेंटीमीटर इंटू 7x plus 5x. Since they are in ratio, that's why I took x, 7x and 5x. Now this can go on that side. That's going to be 540 into 2 और 18 नीचे आ जाएगा, and this is going to be 7x plus 5x is going to be 12x, right? And then 540 into 2 upon 18 into 12 equals to x. Now what I did over here, if you guys have a look very carefully, I didn't do anything. I just simply made everything come on this side, only x was on that side. Now I can very simply cancel things out. 2 1 2, 2 6 12, and 6 1 6, 6 9 54, and 0 90. Okay, and 9 2s are 9, 10s are and 5. तो मेरे पास क्या बचा, 5 बचा. x की वैल्यू 5 आई. नाउ लेट्स सी, आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स. द पैरेलल साइड्स वर 7x and 5x, isn't it? So x की वैल्यू मुझे आ गई 5, so 7 into 5 and the other one is 5 into 5, 35 centimeter. This one is going to be 25 centimeter. So I got length of the parallel sides. These are 35 centimeter and 25 centimeter. Okay, that's how you figure out the length of the sides. You don't have to do anything else in this. Thanks so much for watching this video, guys. I think you did learn something out of it. Have a great day, everyone.